Hi viewers, this is Nisma Ameer with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Mr. Daniyal Siddiqui, CEO of DS Group of Companies. Hello and welcome to our show. It's a pleasure that you're with us today. And to start off, how did the journey start for you, especially the professional one? कैसे चीज़ों को कहते हैं कि शुरू हुई और लेके आप चले? Primarily, I'm an engineer. So, चार चीज़ अस्तोफ़ा मुल्तान, गढ़ गर्मा गदा गोलिस्तान. So I was born in Multan, city of saints. So as you are supposed to do, those who are early achievers in life, उनको पुश कर दिया जाता है to go towards engineering background जी. तो मुझे भी इसी तरह से I was born into an educationist family. So my father was an educationist. He's retired now. He was principal at one of the colleges. So जैसे अब high achievers हो जाते हैं तो but you are pushed to become an engineer. At that time, of course, passions and things were a bit different. So I remember that I never wanted to be an engineer. But then, of course, when at those times when you have high marks, so you're forced to go into engineering background and all scenarios. So that's what happened. And I studied in Multan ji out of my own choice. I had admissions into all big universities across Pakistan, but I wanted to stay with my parents. तो मैं मुल्तान में ही रहा, वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से. Then, like many others, everyone suffers for a bit of start in their careers. So I remember that क्योंकि मैं debater था, debates करता आया था पूरी ज़िंदगी लाइफ में, तो then the career revolved around a lot of debates also. So then got into a bit of media things, but eventually the breakthrough was that I got one of the scholarships to go to Scotland and study there. And I studied in Glasgow, Strathclyde में, and then it was a fully funded scholarship. So remained there in Scotland for a bit and then came back to Pakistan and then started the ventures. अच्छा मुझे बताएं, basically you are an electrical engineer, but you ventured out into renewable energy and the ventures are around it. तो ये जो कह लें transition है या जैसे आपका career pan out किया towards energy, how did that happen? I always knew it that if you want to make an impression in Pakistan and for all the youngsters who are watching, this is very very important. तो मुझे लगता था कि जो बाहर की डिग्री है वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है वो once you come back. So I went there for a fully funded scholarship. That was for masters. And that scholarship when was awarded to me, तो उस टाइम जब मैं ग्लासगो पहुंचा और वहाँ से काम स्टार्ट किया तो I always knew and I had a simple plan that I want to come back to Pakistan and do something जिससे masses को जो है ना वो कुछ फ़ायदा मिल सके और फिर मार्केट को भी टैप करना है. ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट. lot of people say that it's profit purpose before profit, लेकिन sometimes or other it is the market penetration also जो आपको करती है. तो जिस ज़माने की ये बात थी तो उस टाइम पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी और एनर्जी क्राइसिस था. there was a lot of problems of energy. So whether I wasn't sitting in Glasgow, तो मैंने वहाँ ये business plan बनाया. So then I was lucky enough to have few of the Pakistani investors. They always also were looking to come back to invest into Pakistani market. A lot of people don't know that Scotland has a lot of good Pakistani community. वहाँ पे 40 सर्वर सारे हमारे वहाँ से हैं और काफ़ी पाकिस्तानी community है. So at that time, we were able to attract people to come and invest in Pakistan. तो उस time renewable energy एक ऐसी चीज़ थी जो पाकिस्तान में अभी pick up हो रही थी. बहुत untapped हो गई. Untapped थी. Lot of people were investing into it. But before you start telling me about that journey, I want to know that when you were going to Scotland, obviously you had chosen the degree or energy और ये सारा कुछ, तो
विजन पहले से ही था कि मैंने वापस आना है, या वहाँ जाके इट हिट यू कि नहीं, आई नीड टू कम बैक टू माई कंट्री? व्हाट वाज दैट थॉट प्रोसेस लाइक? माय फादर एज आई सेड इज एन एजुकेशनिस्ट, और कुछ चीज़ें उन्होंने, मैं हमेशा कहता हूँ कि उनसे विरासत में भी हमें मिली है। इकबाल ने भी कहा था कि जब तक बाप का इल्म ना बेटे को अगर असबर हो तो पिसर काबिल मिरास से पिदर क्यों कर हो। तो उनसे हमें जो है वो पाकिस्तानियत मिली थी। ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पाकिस्तान स्टडीज। देयर वाज ऑलवेज अ पैशन दैट आई वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान। So फिर पाकिस्तान वापस आए. And then moving on to your venture, which is DS Global, tell us a little more about it. कि क्या products हैं, overall क्या है for the viewers, and generally client base क्या है. और I think आप अपनी conversation में बता रहे थे that how it, you kind of started it, तो वो वहीं से continue करें. DSG or DS Global came into being 4 years ago when I took the leap of faith and started this journey. The business revolves around renewables. Yeah. और when I say renewables, we are focused on Pakistan में बहुत बड़ा potential है solar energy का. So if you see those solar panels and coordinated. So there was business already. Some people were doing business in Pakistan for renewables or solar. We did was that we tapped internet IoT with technology with renewables. Okay. So we kind of gave, we were the pioneers in Pakistan who gave an access to the production of what is happening on your cell phone. So that this is something which made us apart, and there was a unique selling point, kind of unique selling point that we had. And then we started this renewables background and took it further forward. तो वो जो एक जो unique selling point हमें मिला कि we were able to tap through internet and technology and power sector combined. So that was a real game changer. And what about like residential projects? So we do a lot of residential also. So market बहुत अच्छी थी उस time के ऊपर. We went into it, had a very good market share. Government policies were very supportive also at that time. तो फिर हम उसमें चले गए. तो जो मार्केट है वो ज़्यादा इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक की है. एंड वी पुट सोलर पैनल्स इन. सिंपली कोई बंदा हमसे पूछता है कि जी आप करते क्या है, तो हम सोलर पैनल्स वो सबसे आई थिंक आसान अल्फाज में समझ आ जाता है कि हम सोलर पैनल्स जो हैं जी वो रूफटॉप पे लगाते हैं. वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट एंड द क्लाइंट इज एबल टू यूज इट और एबल टू सेल बैक टू द ग्रिड आल्सो इफ दे वांट टू. यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस इंडस्ट्री और इन दिस एस्पेक्ट नाउ. अगर हम देखें ग्लोबली तो पाकिस्तान आपके ख्याल से कहाँ स्टैंड करता है व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी क्राइसिस, स्पेशली जब हम फ्यूचर की बात करते हैं? Right. So Pakistan and India are southeastern countries, जो हमारी South Asian countries, and they have a lot of potential of renewables, especially because अगर हम सिर्फ solar sector की बात करें तो sun shines here. For example, just compare ourselves to Germany. Yeah. Germany was a market leader 3 years ago, and they have almost half the sunlight that we receive the whole year. So they were investing so much into this sector. Pakistan mein this scenario is kicking off, but as I said before as well, there is more focus on right now in terms of technology. जो focus है वो trading के ऊपर है, but rather manufacturing is something that we should come in. But by the time we talk, government is finding it tough right now because the whole world is shifting to renewables, green energy, and the government has just tapped in a 17% sales tax on it. But it was, of course, something which was necessary in terms of government requirements. But I think still a long way to go while competing in other countries for that. और आपके ख्याल से क्या ऐसे measures हैं जो लिए जा सकते हैं to maybe let's say elevate this industry even more so that eventually we can secure our future when it comes to energy crisis and all of these things? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. अच्छा, something which is very interesting about Pakistani market is कि यहाँ external parameters business में बहुत affect करते हैं. I have seen you interview a lot of CEOs across Pakistan, and everyone says that it's difficult to do business in Pakistan. ये common statement है जो आपको हर CEO की मिलेगी. Doing of वो कहते हैं it's a particular term कि business करने में बहुत hindrances और दिक्कत आती है. ऐसी exactly. Cost of doing business जो है वो उसमें मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर्स हैं, एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं, यहाँ का कल्चरल एलिमेंट्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो इट्स टफ इन पाकिस्तान. सो मैं ये समझता हूँ कि फॉर रिजॉल्विंग मैटर्स इन पाकिस्तान, government needs to make business, new ventures or new ideas easy. For example, nowadays one window solutions आ गई हैं. People can just log into internet and register their own company and proceed. By the time I started, it wasn't the case.
So it was a tough market for anyone to explore, to analyze, to realize, and to also develop. I think when a market is untapped ना तो उसमें और ज़्यादा difficulty होती है. Now if the players are gonna come in तो वो आप लोग जो एक track set कर चुके हैं उसमें कुछ आसानी है जो उनको मिलेगी. Exactly. Definitely. So क्योंकि SOPs मौजूद नहीं होते, there aren't people available for helping you out in that matter. So what I think is that in terms of this business, government needs to actually come up with some lot of new strategies. For example, अभी तो हम protest से ही नहीं निकल रहे because just couple of weeks ago, government has put on additional sales tax onto this scenarios which wasn't there before. So let's look at the whole world where they're going towards green energy. अच्छा मुझे बताएं कि पेंडेमिक ने कोविड ने किस तरह से इम्पैक्ट किया गिवन के अगर 4 साल को इतना लंबा अरसा नहीं होता एक कह रहे न्यू फेज ही होता है तो उस लिहाज से हाउ डिड दैट अफेक्ट योर बिजनेस योर वेंचर एंड देन हाउ वर यू एबल टू डील विद द सिचुएशन सी पेंडेमिक हैज अफेक्टेड every business and you know it more or less uska effect har jagah pe aaya hai except the IT businesses except the IT businesses or except which are revolving around you digital know e-commerce or digitalization. One of the things I invested when we had a success in the start, we were into profits the very first year and made a decent profit. So we invested heavily on technology, ERP solutions, just making sure that the process is automated. So we were lucky enough to have one of the best ERP systems running. तो उस pandemic ने हमें as a company grow करने में help किया because we had the system already. ये आपने बहुत सुना होगा कि जो technology oriented थे companies थी, they were able to make a very very good impact. We made sure that those people जो नहीं हैं जिनका ज़रूरी है दफ्तर आना वो घर से काम कर रहे थे and but primarily because हम industries में जाते हैं और industry में काम करना है तो yeah we were affected. Pandemic did affect us but we were lucky enough to invest on people and during pandemic we had growth also. Moving on to more of your ventures, Evolve is also one of your ventures which revolves around trainings and it's on learning and development and all of that. So elaborate a bit more on that. And how did that come along? Like उसकी initiation या उसका idea इस सब में एक तरफ solar panels चल रहे हैं और एक तरफ ये चल रहा है. How did that happen? So I was a debater throughout my life. मैं मुझे ये नहीं याद कि मैंने पेन कब उठाया. हाँ ये ज़रूर याद है कि तकरीरें कब की, debates कब की. तो मैं हमेशा से जैसे कहते हैं कि बोलने का तो element शुरू से था. Then I remember that when I was in first year of my university, I used to teach public speaking or English language to students double to my age. So I was doing that also. So फिर corporate trainings में I had some very good mentors. One of few of the best speakers, Arif Anis Malik, M.A. Jahangir, these were the people who I was able to coordinate with and I was a student of people like Kamran Rizvi and they trained जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा अंदर तो मौजूद ही था लेकिन उन्होंने उसको और उजागर किया. So the game changed when I went to Scotland. So I explored my public speaking side and I was lucky enough to complete my NLP, Neuro-Linguistic Programming training in UK. And then I was also able to work for Success Resources, जो कि दुनिया का number 1 इदारा है जो trainings कराता है. I used to watch videos of Tony Robbins. Where you got to work with a lot of alongside like international speakers. Yes. वो experience भी काफी मेरे लिए बचपन की ख्वाहिश थी. We used to watch Tony Robbins और उनकी videos, the way he used to speak, जो aura उनका create होता था. So I remember that when I used to live in Scotland और यहाँ से कोई 8 या 9 घंटे की बस की राइड होती थी गोइंग टू लंदन. पूरी रात सफ़र करता था जस्ट टू बी पार्ट ऑफ देयर टीम एंड बिकम देयर मेन टीम जो वर फोकसिंग ऑन द ट्रेनिंग्स इन द लंदन एंड द यूके साइड. और फिर वापस आके मंडे ट्यूसडे को यूनिवर्सिटीज़ को भी हैंडल करना होता था बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज अ स्टूडेंट देयर. सो आई रिमेंबर गेटिंग वर्किंग विद देम. तो वहाँ से जो मुझे ट्रेनिंग और एक्सपोजर मिला आई वाज एबल टू ब्रिंग बैक दिस टू पाकिस्तान. देन लकीली बिकॉज आई वाज अ यूके एम्प्लॉय ब्रिटिश कौंसिल के साथ काम करने का बहुत मौका मिला एंड दिस लर्निंग एंड डेवलपमेंट थिंग कंटिन्यूड. एक ख़ास पॉइंट पे लाइफ में आके एज अ बिजनेसमैन you realize it's the purpose before profit that matters. It's fine at a still certain time, but it's the purpose before profit. So मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा काम
जिससे you are able to make impact on lives that matter. So that was what Evolve was all about. We started this venture about corporate trainings, जिसमें हमारे corporate clients फिर एक के बाद एक बढ़ते चले गए, and we do corporate trainings and corporate events. So that's what we are engaged into it, and Allah has blessed us. It's two different stories. Yes, yeah. One side you are into renewables and energy sector, and they're very energy project. far apart. They can't be like similar. लेकिन इसमें सबसे अहम जो रोल था वो I'll be honest was about team. मैं हमेशा कहता हूँ कि जब teams develop हो जाती हैं, process automate हो जाते हैं, so then there is nothing better than that. So teams बन गई, process automate हो गए, dynamic team मिल गई, so I was able to have the most dynamic manager. So you have met our team also, so a young team. Yeah. Nobody believes when they look at them that we are turning around what we are doing right now, but it's all about a team effort, and we have reached where we are right now. Definitely, you have the expertise, and you are also acting as a consultant for different Pakistani corporate firms, जहाँ आप trainings दे रहे हैं on relationship building, strategy, and all of that, much more. वो experience कैसा है? Do you feel like you're passionate about it, so you enjoy it? How do you feel about it? Like experience कैसा रहता है वो? Just making sure कि जो हमारी corporate world है, जो corporate की दुनिया है, trainings हैं, इसमें जो लोग मौजूद हैं, हमने उनको इंस्पायर करना है. This is something which is very important and a topic which is very close to my heart. मैं हमेशा उसी बात को रिलेट करूँगा, जब आप एक ख़ास टाइम पे आ जाएं, जब आपको लगे कि यार कितनी ज़िंदगी आप इम्पैक्ट कर रहे हैं, this is what matters more than what you're doing apart from it, that matters. हमारा जो यूथ है, जो हमारे यंग प्रोफेशनल्स हैं, what potential do you see? मेरा अपना ये पर्सनल ख्याल है और मेरी ओपिनियन है कि if we look at in terms of trainings, so जो हमारी यूथ है उसमें बहुत पोटेंशियल है. इशू सिर्फ ये है कि उनको गाइडेंस और सही पाथ पर डायरेक्शंस मिलाया जाए. सो लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज कॉल मी एंड फॉर टॉकिंग टू यंगस्टर्स एंड गेटिंग देयर आइडिया कि वो उनको आप एडवाइस करें. तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए. सो वी हायर अ लॉट ऑफ पीपल. इंजीनियर्स हम हायर करते हैं, हम मार्केटिंग के लोग हायर करते हैं. ट्रस्ट मी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड डज नॉट लुक अ लॉट ऑन नंबर्स. What they look at is कि people skills कितनी है. So I think our youth needs to be trained a lot upon people skills, personal skills. This is what I've learned from the UK or foreign environment also. I've traveled more than 40 countries to realize कि जितना potential और जितना जिसको कहते हैं knowledge पाकिस्तानी लोगों के students के पास होता है. And also the hunger to know more and to do more. हाँ. अब मैं आपको comparison बताऊँ ना, अगर आप पाकिस्तानी students को compare करें जब वो UK पहुँचते हैं, they will always be considered a little sharper. हाँ. मतलब हम ये कहेंगे कि यार हम थोड़े हार्ड वर्किंग भी ज़्यादा हैं, या जिसे मैं कहता हूँ कि हम इतना मार खा चुके होते हैं लाइफ में कि जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता है कि उस तरह से लाइफ नहीं होती. सो माय summary of this is कि our youth has a lot of potential if there is directions, there is talk upon personality development. Mandatory कर दें एक कोर्स कि जी आपने पर्सनालिटी का पर्सनालिटी से रिलेटेड आपने कुछ पढ़ना है. Welcome back to our show. Actually, given that we're on the topic of trainings and all of that, when you are conducting a session, let's say, क्या ऐसे elements हैं जो आपकी कोशिश होती है you would want to inculcate in the people being trained, या ऐसे important elements जो एक young professional को चाहिए हैं? तो जब भी मैं ट्रेनिंग्स करता हूँ मेरा एक फोकस होता है सही कि टू इनकैलकुलेट और जस्ट टू गिव माय पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑल दोस थिंग्स व्हिच आई हैव लर्न थ्रू माय लाइफ, रादर देन वो बुकिश नॉलेज या वो जुमले वो अल्फाजी अच्छी बताएं कि वो एक सेशन में 5 बजे उठ के चले जाएं और वाओ लाइफ का एक एक्सपीरियंस ले लें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉट ऑफ पीपल से दैट trainers have become entertainers कि वो एक बड़ा एक दिन का सेशन होता है और कमर्शलाइज काम है, लेकिन actually the real essence comes that what you have learned from life and you're able to give in the and I think only then you are able to inspire the people who are listening to you when they know that this person is coming with experience or with an example of his own self. वरना तो वो ऐसे ना कि आपने theory पढ़ाना शुरू कर दिया. Exactly, that's the point. First be first and then become a trainer. True. Train others after you have done something about business. अब मैं कई दफ़ा देख रहा होता हूँ कि जी बिजनेस तो लाइफ में नहीं किया,
लेकिन हम बिजनेस को जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में या उसके प्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेरा एक सिंपल सा फोकस होता है, लेट्स ट्रेन पीपल अप दैट व्हेन दे गो बैक इन द इवनिंग एटलीस्ट give them food for thought कि उनके जहन में इतनी बातें होंगी, when they go back actually they are able to realize and make the impact out of it. So that is what matters. I think very realistic, जो कि ज़रूरी है, practical है. अच्छा मुझे बताएं, you're a senior entrepreneur and you have so many successful projects which is great. But उस नज़र से जब आप देखें कि एक entrepreneur जो भी उसका stature हो, छोटा हो बड़ा हो, क्या ऐसे elements ज़रूरी हैं एक entrepreneur में जो उसको eventually एक successful entrepreneur बनाएंगे? लेकिन जब आप पाकिस्तान में entrepreneurship के सफ़र की बात करते हैं ना, तो I have been माशाल्लाह following your show also. You have interviewed people like Salim Gauri and others also, and I have been looking at what they're saying, their essence. इन सब की जर्नी स्टार्ट होती है, आपने अगर सुना होगा तो more or less they will be would have been one man army. Yeah. मैं एक टिप ज़रूर दूंगा for all the people who are watching. When I wanted to start my own business, so I just did one particular crash course to understand and what is that. That wasn't about marketing. That wasn't about sales. I learned actually finance and tax. Okay. So I had a degree in my bachelor's was electrical engineering. Okay. My master's was renewable and I did one master's from UET Lahore in engineering management. लेकिन मैंने किसी जगह पे भी ना ये grip नहीं आई कि I knew Pakistani tax system. जब तक मुझे ये ना बताओ कि मैंने खरीदना कैसे और बेचना कैसे, बिल्कुल. So I would not have the grip. So what I did was I learned tax. I was lucky enough to have a mentor, Zubair साहब. उन्होंने मुझे टैक्स समझाया. जब आपको टैक्स समझ आ जाता है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ आ जाती है. How that will take place. For all the people who are watching, it is very important to learn financial management in businesses. Maybe they can take like a crash course if they're done studying. फिर कुछ crash course life में. Maybe अब वो life के ऐसे हिस्से में जब वो सिर्फ काम करना चाहते हैं और वो पढ़ना नहीं चाहते, तो आपसे आके crash course ले. लाइफ ने बहुत सारे crash courses मुझे सिखाए भी हैं. So I remember, मैं आपसे बड़ी मजे की एक बात शेयर करता हूँ. तो मुझे जो लाइफ का लेसन मिला ना, जिसने मुझे कहा कि यार दानियाल, दुनिया आपको एक और तराजू में नापती है. इतना अच्छा स्पीकर हो जाओ, मीडिया, ये वो सब कुछ. सो आई रिमेंबर दैट व्हेन आई स्टार्टेड डीएस ग्लोबल, तो आई वांटेड दैट फर्स्ट कस्टमर. मुझे एक वो पहला कस्टमर चाहिए था, यार ये मुझे मिल जाए. अब आपने कई जगह पे सुना होगा. सही. तो मुझे उनसे अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल गया. आई डोंट वांट टू मेक इट ड्रामेटाइज. वो मुझे कस्टमर मिला, मैंने वो चेक किया और मैं बैंक में गया. अच्छा उससे पहले मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना था डीएस ग्लोबल का. सही. आई रिमेंबर आई वेंट टू द बैंक. मुझे देखा अच्छा बैंक अकाउंट खोलने हैं, खुद ही आ गए. तो it took me 5 to 6 hours to just sit there, different form, ये दे दें वो दे दें, 5-6 घंटे सब कुछ लगा के ना, फिर उसके बाद कितनी देर खड़ा रखा. अच्छा 1 मिनट बैठे करते हैं. अब वो अकाउंट खुल गया जी. उन्होंने कहा, मैं क्या चेक में कब जमा करा सकता हूँ? उन्होंने कहा जी वो आप परसों आएंगे, वो ये होगा. मैं परसों जा गया, तो फिर मैं वो चेक लेके गया. अब दैट चेक वाज हेवी. इट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट. अब मैं इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट करता था. सही. तो मैं गया तो अकेला छोड़ने मुझे 2 बैंक मैनेजर के साथ 2-3 और लोग बाहर आए. आई न्यू वेयर दिस वाज गोइंग. तो मैंने फिर रियलाइज कर लिया कि दानियाल, लाइफ इज ऑल अबाउट, कुछ अरसे तक तो लोग आपको पैसे में नापेंगे बिल्कुल. और वो उस वक्त तक आई थिंक काफी अरसे तक ये साथ चलता है. दिस इज लाइक एन ऑनगोइंग तराजू that keeps on going. लेकिन इंटरेस्टिंगली मैंने अभी ये बड़ा सोने के रियलाइज कर लिया. आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल, कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं कि पर्पस बिफोर प्रॉफिट इज एट अ सर्टेन बिजनेस पॉइंट. जब रीच हो जाता है तो उसके बाद आप रियलाइज कर लेते हैं कि दिस इज व्हाट मैटर्स. सो राइट नाउ it is all about how many lives you are able to touch. Yes, we make a lot of more money into energy projects. Learning and development में भी of course बहुत पैसा है, लेकिन शायद उतना नहीं है जितना. No, but I want you to pinpoint those 3-4 traits that you think is very important, because देखें, स्टार्टअप लगाना और उसको सस्टेन कर जाना और उसके साथ लगे रहना, क्योंकि हर एक को पहले साल में नहीं भी सक्सेस मिलती. बाय बुक्स तो हमें बताया जाता है कि 5 साल तक अगर आप ब्रेक इवन भी करें तो दैट इज सक्सेस, राइट. तो वो 4-5 ट्रेड्स जो एक एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए, जिससे वो लगा रहे और इवेंचुअली वो सक्सेस उसको मिल जाए, वो आपकी नज़र में क्या होगा? मैं अगेन रिट्रेट करूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल अक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग जब शुरू में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो अपने फाइनेंसेस और बिजनेस के फाइनेंस को रिलेट कर जाते हैं. तो पता ये लगता है कि यार घर में जो है वो बच्चा वेट कर रहा है, कोई और कर रहे हैं, तो आपने बिजनेस का पैसा उस तरफ एंगेज कर दिया.
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पाकिस्तान में जैसे हम आम अल्फाज में सिंपल सी बात कहें कि यू शुड नो किस अंदाज में और किस तरह लोगों से गालियाँ भी सुननी है, लड़ना भी है, लेकिन अपना पैशन नहीं छोड़ना। सही, persistence is the key for that. So that is something I again say कि सुबह उठें फिर वही काम करें और फिर एक नए कस्टमर का काम करें। सही। 3, that first customer, that first little door opening is what matters. सही। वो एक कस्टमर बन जाएगा, then that becomes your marketing company. And lastly, fourth most important I would say, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी सर्विस ओरिएंटेड प्रोडक्ट है या है, उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस या सर्विसेज देने पे फोकस करें। कस्टमर सर्विस बेस्ड। आई बिलीव इन माय बिजनेस नेचर it is not what marketing we do matters. What matters is that how we are able to give a wow experience to a customer. हमारी टीम का एक मंत्रा है, वो बहुत मशहूर भी हुआ, हम कहते थे कि जी wow experience देना। That wow experience is ultimately, if you will have a wow experience, you will supposedly tell somebody in next day. That will generate. So that is what matters. So these are, I believe, the 4 important points which is very important for anybody who wants to be an entrepreneur in Pakistan. In life, especially professional, personal, ups and downs आते रहते हैं। प्रोफेशनली इंसान बहुत कुछ सोचता है, वो उस तरह से नहीं पैन आउट होता कभी कभार। तो ऐसे किसी फेज़ में जब आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट देखनी पड़ जाए या थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड हाउ डू यू कीप ऑन गोइंग? राइट, सो जनरली एक एंटरप्रेन्योर को नेगेटिविटी की तो सोचनी ही नहीं चाहिए लाइफ में। ओनली ह्यूमंस ना, इट कैन, बट few things which make you turn that disappointment into success is the motivation behind it. Try and find out your happy corners in life. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि there was a very famous quote also, there is a garden between right and wrong. But there is a garden which is all about happiness. So try and find your own happiness, or as I call it, pursuit of happiness. तो वो चीज़ें जो आपको दें, वो आपके दोस्त, वो आपके ब्रेक पॉइंट्स जो हैं वो, और मैं हमेशा एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द लोग और चीज़ें ये पॉजिटिव रखें तो खुद ब खुद सब कुछ चीज़ें लाइफ में वापस पॉजिटिव हो जाती हैं। What do you think is your, let's say, leadership style? और एक नॉर्मल दिन, आपका एक प्रोफेशनल दिन कैसे शुरू होता है और किस तरह वो चलता है पूरा दिन? ये आदत बहुत ज़्यादा थी कि जी सारे काम खुद करने हैं, तसल्ली नहीं होती, शायद ये भी एक फैक्टर होता है ना। फिर मैंने कुछ कोचिंग ली, there were people who inspired me, so I talked to them, so they told me try and delegate the work और लोगों से काम कराएं। तो अभी मुझे शुरू में बहुत मुश्किल हुई, मुझे लगता था ये काम तो मैं यार 2 मिनट में कर लूंगा, ये मैं किसी को ये मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो इसको बड़ी मुश्किल से इस फीलिंग को जब्त करके रखा। सही। So then leadership taught me that it is all about taking the work, and secondly it is all about the motivation level of the team should be high. I think expansion is not possible without delegation. Yeah, of course. That is something which is very very important. अच्छा, और कभी ये लगा है कि I have achieved so much at a young age and it might be like कि अच्छा बस ठीक है, काफ़ी कुछ कर लिया, या it might get to your head. कभी अगर ऐसी कोई फीलिंग आए तो how do you let's say counter to that, या क्या करते हैं फिर? Listen to absorb, not to respond. Okay. तो ये lot of people do that कि वो सुनते सिर्फ इस वजह से हैं कि रिस्पॉन्ड कर सकें या वाओ फीलिंग ले सकें। बिल्कुल। So I have a simple feeling, listen to absorb it. And then business is ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि चीज़ है कि वो आपको वक्त के साथ सब चीज़ें सिखा देती हैं कि कहाँ आपको रिस्पॉन्ड करना है, कहाँ नहीं आने देना। और अगर थोड़ी सी भी ये फीलिंग आए कि यार कुछ बहुत बड़े बन गए, तो फौरी तौर पे कुछ इर्द गिर्द फेलियर स्टोरीज को देख लें। So that bring you to the ground then. Now we are in a कह लें digital age. In the past few years जो एक tech और एक digital aspect है वो बहुत ज़्यादा grow किया है, उसकी importance बहुत grow की है। And in that regard, how important do you think that it is for the industries and the companies to cope up and to automate themselves? Generally जैसे हम social media को देखते हैं, उसने कितना augment और catalyze किया है entrepreneurship को। इस सब को लेके आपका क्या thought process है? A very simple answer for that. Technology is the only future aspect if you want to survive into this world, and especially into a world where your all customer is
just a click away or just a swipe away. And I think one good thing out of COVID ये ज़रूर हुई है कि लोगों ने importance ज़रा जल्दी realize कर ली है tech की, digital की, जो शायद अगर हम COVID से ना गुजरते तो वो अभी process थोड़ा slow ही रहना था. Exactly, I think COVID ने शायद हमें मजबूर किया है, हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन सेशंस पे मजबूर कर दिया है. So I've got my little 4 years old Mikhail, तो मैं जब उनके साथ बैठ के और उनकी पढ़ाई और उनके मैट्रिक्स को देख रहा होता हूँ तो मैं रियलाइज करता हूँ कि how the world has changed. And thank God that people have realized पाकिस्तान में तो शायद अभी potential 20% है. True. Of how to go online and on a very micro level. I think a day back I was discussing this with my husband and I'm happy that one day I get to be on that class online with my daughter because I get to know कि class में क्या हो रहा है, what is she doing, how the teacher is like, वरना वो चीज़ें आपको पता ही नहीं चल पाती. नहीं पता लगती. तो we are in a different world where our kids will be and where our parents have been, but that is what the life is all about. अच्छा, अब आगे मुझे बताएं कि when let's say you're hiring someone and you're interviewing someone, तो क्या ऐसे traits होते हैं जो you find attractive or you feel that this person should be part of my team? मैं आज आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ इतनी खुल गई हैं, इट्स अनफॉर्चुनेट बट एज आई वाज टेलिंग हम यहाँ एक ऐड लगाते हैं तो 400 सीवीज आती हैं. हमारी एचआर की मैडम जो हमारी टीम है पूरी वो बेचारी अपने सर पकड़ के बैठ जाती है कि हम करेंगे क्या. बिल्कुल. तो फिर मैं इन्हें कहता हूँ कि जब इंटरव्यूज़ करें तो सी द पर्सन बिलोंग्स. बिल्कुल. तो दैट बिलोंगनेस इज़ ऑल अबाउट कि वो कंपनी के आपके जो मेन फोकस एलिमेंट्स हैं उनके साथ लाइज ऑन करें. सो फॉर एग्जांपल वी हैव आवर कोर वैल्यूज़. कि द पर्सन इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, द पर्सन इज़ इंटेग्रिटी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल स्किल. सो बट मैं बहुत इंपॉर्टेंस उन लोगों को देता हूँ जो कॉन्फिडेंटली अपनी बात कन्वे करते हैं. हाँ. Welcome back to our show. So as we were just discussing, what is your take on females being part of the workforce? कितनी importance दी जाती है आपके ventures में generally? What's your take on that? I absolutely think कि जो females are very very important. I am always a supporter of female involved in our office. My wife, she works and I support her. She's part of a government support system. लेकिन मैं उसको भी support करता हूँ in our office also. We have a lot of female presence and at the top level also. So that is something which we believe that it is important. और मैं again ये तमाम उन businessmen को भी request करूँगा कि try and invest into females hiring processes and invest into females leadership roles. Just to summarize the answer, कि हम उस वक्त तक as a nation पाकिस्तान कामयाब नहीं होंगे जब तक females नहीं खड़ी होंगी. That's very refreshing to hear. Also, what's your take on corporate social responsibility? आप लोगों की जो organization है उसका क्या role है in CSR? So in CSR हम तो बुनियादी तौर पे जो काम करते हैं इसको बहुत सारे लोग CSR समझते हैं कि environment का काम करें. But I'm very proud. नदीफा हमारी chief marketing officer हैं, उनका baby था कि she developed an idea of tree plantation. Okay. And I'm very proud that we have till now planted 1 million trees. Wow. And expanding, going to different schools. We are putting in actually specifically money into this project of going into and planting trees and establishing. So tree plantation drive, Plant for a Planet is something which we are expanding. And alhamdulillah, it has been successful and I'm proud of the team for this great idea also. That's great. So you've also been awarded in 2017 by British Council as the Best Entrepreneur Award. जब इस तरह की and various other awards as well. तो जब इस तरह के accolades और एक कह लें acknowledgement मिलती है on an international level, how does that feel? Alhamdulillah, I always look back to my parents first because मैं एक business के घराने से नहीं हूँ. I am born as a son of a professor. Yeah. And generally वो मैंने जैसे बात की थी कि उन्होंने हमेशा जो मिरास में दिया है वो तालीम दी है और एक घर का कल्चर दिया था. तो my sister was a topper, my brother was a topper, I was able to get good marks. So what I believe as an entrepreneur right now, when I look back for all the achievements I have, it was because of the parents and kind of the upbringing that I had. True. और मैं ये reflect करता हूँ उसी चीज़ को
British consul के साथ, because I was representing Pakistan and I was on a fully funded scholarship in UK. Not a lot of UK scholarships are available. America के फिर भी होते हैं, लेकिन UK के बहुत कम scholarships हैं. So I was lucky enough to be a part of it and come out of it successful and being recognized at the world scale. Then उसके बाद British consul helped me to spread my knowledge in Ireland also. I went a couple of times there after coming back to Pakistan and still spreading the word. But I look back and I thank God for being born where I am. तो मैंने जो books भी लिखी हैं उनमें भी ये जिक्र अपने वालिद का भी किया है कि I am the most I feel the most happiest son of the world because that's how it is. Books की बात जहाँ तक आपने भी खुद से you brought it up. You have written 3 books. How do you firstly find the time to do that? And where did that come from? कि मुझे किताबें भी लिखनी हैं. They're all internationally acclaimed books. तो वो thought process बताएं. Tell us a little more about your books also. When I rewind back and when I used to be a kid, so my father had a library in his office. He had मतलब वो professor थे तो घर में उन्होंने एक library बनाई थी and it was books. अच्छा. तो ये हमारा playing area था. ठीक है. I don't remember the first toy I had, but I do remember the first book I had. You had, wow. तो शायद मेरा वो बड़ा ही मैं किताबों में हुआ. सही. 2 तो मेरे ट्रैवलॉग हैं, लेकिन एक जो किताब है वो मेरा मैं समझता हूँ कि अगर लाइफ में कुछ accomplishment है, अबल तो I don't believe I have done anything, was that because I wanted to pay homage rather than tribute to my father. Okay. I researched on my father's life and I wrote a book on him. Wow. Rather than हम माशाल्लाह से he's retired now, is living his own life, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि वो जो बात थी कि उनके लाइफ पे किताब लिखी and it was well recognized because it was written on a father about his life. ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत motivation थी. So the 4th one is also coming out. There's a 4th one, okay. It's coming out right now. In fact, there are 2 books which will be out right now. One is upon a mentor, Brigadier Shadab. He has been at a very senior government position, so he's a mentor. I look towards him. So I call him my godfather. Okay, so maybe I'm already revealing the name of the book. You kind of did now. So that's something which is coming up. So to summarize, I think वो जो विरासत में मिला था वो शायद इल्म और मिरास थी जिसकी वजह से. So would it be safe to say that अगर हम आपसे पूछें कि आपके role model कौन है, तो then I think I know the answer. It's your father. He still is. He's an inspiration. He's right now 78, but I think I'll show you in my office. I have traveled more than 25 countries with my father. Wow, that's amazing. I've traveled only 2 with my wife, but I've traveled 25 with my father. Okay. तो वो शायद आपको बता सकते हैं who's a role model. But I love for the fact that what he has contributed to our lives. आपने बहुत interviews किए होंगे उन businessmen के जो business family में पैदा हुए हैं. लेकिन I was born into a family in which I got in विरासत was ilm, knowledge, able wisdom, and that was what I got. So he is my inspiration. Definitely. He still becomes. और मैं जो 25 मुल्कों में फिरा हूँ, उनका एनर्जी लेवल वो था कि हम यंग होके उनके पीछे दौड़े होते थे, वो आगे से आगे निकाल रहे हैं. So that's how it is. That's amazing. He is my role model. Great. अच्छा, कोई ऐसा let's say decision professional जो आपको लेना बहुत मुश्किल लगता हो, या कोई एक भी हो सकता है जो कभी लिया हो और वो बड़ा डिफिकल्ट लगा हो? तो मैं जब स्कॉटलैंड से वापस आया तो I joined a Pakistani investor and I had as a country director. It was very very difficult at that time कि एक खास टाइम के बाद मैंने वो सारा बिजनेस बनाया था. Then I decided to take that leap of faith. Plunge, and I decided to this is what I will do. That's how it is. वो डिसीजन बहुत मुश्किल होगा. मेरा एक हमेशा से पैशन है कि वो डिसीजन था जो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का. You got to live only once. ये मेरा मंत्रा है जो मुझे शायद डिसीजन लेने में आसानी की. सही. And then it was very much positive. We've had our bit of technical and professional questions. What is your idea of happiness? Able to influence people's life positively. Okay. And bring about a change in their life. Just something on a lighter note, something which is less philanthropic. अपने लिए कुछ. Going back at home and playing with your son. Great. I think there is no better feeling like than that. Definitely. और गुस्सा जो है उसका क्या करते हैं जब गुस्सा आए तो how do you manage your anger?
आई थिंक बिजनेस ने सिखा दिया है गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है. मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई. अब गुस्सा आता नहीं है. और जब चीज़ें बहुत स्ट्रेसफुल हो रही हों प्रोफेशनली वर्क वाइज, तो कोई एक ऐसी कह लें इंस्टिंक्ट या एक्टिविटी जो आप करना चाहें टू ब्रेक ऑफ फ्रॉम द स्ट्रेस? आई हैव गॉट 7 फ्रेंड्स. हम बचपन से दोस्त हैं. 7 फ्रेंड्स? हम वो एक सुपर 7 फ्रेंड्स हैं. ओके, ग्रेट. आई ऑलवेज फाइंड टाइम टू गो बैक विद देम और फिर उनके साथ हम वो लंगोटिया यार बन जाते हैं. अच्छा. So I find time to spend time with those 7 friends and the friends that I have now. Great. And as you said that you're like an ardent traveler, favorite destination internationally? I think it'll be between Cape Town and Istanbul. Okay. But I think it will be Istanbul because of apart from Cape Town has the best beaches. Okay, yeah. LA has best beaches also, I think. Yes. But I think it will be going down to Istanbul. And how about Pakistan? Any destination that you want to keep on going back to? I went to Gwadar. Unfortunately, फिर business के लिए गया था. But I believe that one day Gwadar would be the best where it stands right now. सही. मेरी बहुत ख्वाहिश भी है कि वो develop हो. तो I love Gwadar for its peace right now. Even they have some really nice beaches, is what I've heard. Absolutely thrilling. I haven't seen I've been to. I am investing into Gwadar also because I believe that's a future for Pakistan also. But बहुत खूबसूरत जगह है और I believe Gwadar. And how do you make sure to balance out your professional and your personal life? It's very difficult. Sure. My family tells me that, लेकिन lately मैंने realize कर लिया है और अब क्योंकि systems बन गए हैं. हाँ जी. तो as I said कि family और friends को time देता हूँ. So, as the great Mahendra Singh Dhoni once said that he knows how to switch on and switch off. अब मैं कोशिश करता हूँ कि Friday evening afterwards no business, no work. So it's Saturday and Sunday. Yeah. I tend to spend time with friends and family. Great. And 5 days just focus completely on work. ये गोरों का मंत्र है जो मैंने सीखा है. And how about you suggesting us a book that you've found very impactful या कोई भी एक favorite किताब जो आप suggest मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार मैं रिग्रेट भी करता हूँ, बहुत बार जो है वो कुरान जो है वो कंप्लीट तर्जुमे के साथ पढ़ा है. सो इट हैज़ गिवन मी इंस्पिरेशन इन सम ऑफ द सूरास. एज अ यंगस्टर्स मैं हमेशा कहूँगा कि इंग्लिश या उर्दू के अंदर ना जो तर्जुमा है वो ज़रूर पढ़ें. दैट इंस्पायर्स. बट आई थिंक रिचर्ड ब्रैंसन की एक बुक है, अजीब सा उसका नाम है, स्क्रू इट लेट्स डू इट. So it's a Richard Branson book. He talks about fun. मैं शायद उसको 200 दफ़ा पढ़ चुका हूँ. अच्छा. But I then to read it, go through it. I'm a good reader. मुझे reading का बहुत शौक है. सही. So I think that book I will suggest. Richard Branson, Screw It, Let's Do It. अच्छा, now to move towards ending our whole conversation. अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है, professional one, क्या सीखा है आपने? एक ख़ास टाइम तक तो लोग आपको आपके पैसे से जो है ना वो तोलेंगे. सही. पाकिस्तान में आपको फेक इट टिल यू मेक इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. I have learned that also. This is a very new kind of answer that we're getting for this question. It is very important to fake it till you make it as an entrepreneur. But I think मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा है और शायद लेटली बहुत अल्लाह का करम है कि जल्दी सीख लिया है. राइट नाउ इट्स नॉट अबाउट मे बी जब वो टाइम गुजर चुका है. इट्स नॉट अबाउट मेकिंग प्रॉफिट्स. इट्स ऑल अबाउट हाउ मेनी लाइव्स यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस. फ्रॉम दैट वन पर्सन अलोन टू नाउ हायरिंग मोर देन 350 पीपल इन द टीम. आई बिलीव इट्स 350 stories. So not a one great deal gives me that success or happiness, which while just knowing when I'm going back home और जब first को 350 घरानों में सैलरी जाती होगी तो वो कितना खुश होते होंगे. I think there's nothing better feeling than that feeling. Sahi. And to sum up our conversation, any message or advice that you would want to give to, let's say, the budding young professionals, young entrepreneurs, उनके लिए कुछ? देखिए एक बहुत सिंपल सा मामला है. 6 महीने का राशन पानी इकट्ठा कर लें. बड़े तो बहुत सारे लोग सिंपल करते हैं. अगर शादीशुदा हैं तो फैमिली के 6 महीने का राशन पानी वो किसी तरह से कहीं से इकट्ठा करके पाक कर दें ताकि आपको ये टेंशन न रहे मेरा किचन कैसे चलेगा, मेरा खाना कैसे चलेगा, हाउ वुड दैट रन, एंड जस्ट जंप इनटू इट.
It's a great advice. Life would tell you its own ways, and life is a great teacher. सही. तो 6 महीने के लिए राशन पानी रख लें, 7वें महीने का अल्लाह ताला खुद ही तमाम कर देगा. जबरदस्त. So 6 months of kitchen running expenses, सही. and rest will take place. That's the simple mantra for all the entrepreneurs who want to be entrepreneurs. Well, I think that's a very different and I think a very workable advice. Thank you so much. Thank you very much. I would like to thank you and your team also. It's been great. Yeah. I've been following your shows also, and I think it is going on top chart, especially because you're talking to the people who are able to bring some more. Well, this conversation was truly refreshing and very, very inspirational, especially हमारे जो कह लें young professionals हैं उनके लिए. We're very thankful that you took so much time for us and you shared your experiences. Thank you so much. Thank you very much. So this was a conversation with Mr. Daniyal Siddiqui, a truly inspiring and refreshing conversation, especially for our youth who are looking to start up their own ventures. For more such conversations, keep on watching our show Meet the CEO, only on Discover Pakistan.